तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। The Lok Sabha was in uproar today, that is on Tuesday, after BJP MP Anurag Thakur remarked at Congress party and the leader of the opposition Rahul Gandhi over the issue of caste census. His statement was like this. He said, whose caste is not known is talking about the census. This was the statement of Anurag Thakur. Being a ruling party member, Anurag Thakur should not have told this in Lok Sabha. While delivering his caste remark in the Lok Sabha by Anurag Thakur, it led to an uproar in the House, with Rahul Gandhi also interrupting Anurag Thakur's speech. He said that you can insult me as much as you want, but you should not forget that you will get the caste census bill passed in parliament. This was his statement. So how can one ask someone's caste? This is quite astonished. Being a ruling party member, he should not tell like this. How he dared to ask someone's caste? Nobody cannot ask anyone's caste. Again in Lok Sabha. But Anurag Thakur said this because it is his party's sanskar, I think. That is my personal opinion. Because it is his party's sanskar. This is Anurag Thakur's sanskar. But Rahul Gandhi said that whoever in this country speaks for the downtrodden, fights for them, they have to take abuses from others. And he said, I will take all the abuses happily. Like Arjun in Mahabharata, I can only see the peace eye. We'll get caste census done, and that's it. तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, माइक यहाँ से नहीं जाता। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। He said, you can abuse me however many times you like. And he claimed that Anurag Thakur abused him and insulted him.
But wait untoward. I do not want an apology from him. He said he does not want apology from Anurag Thakur. He does not need it. So this was the incident. Today we shocked the entire nation, which shocked the people. On Monday, Rahul Gandhi has given his statement on budget. In his speech, he has shown देश का हलवा to Chakravyuh, and from Chakravyuh to A1, A2. I mean Adani and Ambani. Listen his top moments from Rahul Gandhi's Lok Sabha speech. The opposition leader in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, launched a scathing attack on the Modi government during the debate on the Union Budget 2024-25. He said that 73% of India's population, including OBCs, SCs, and the economically disadvantaged among the general caste, were overlooked. Yes, friends, that's the fact. The OBCs, the SCs, and those who belong to economically disadvantaged among the general castes, of the general category, they are overlooked. They are overlooked by BJP government. May it be the middle class, OBC, SC, ST, and others. He has slammed the Modi government for neglecting these sections of the society while taking part in the discussion on Union Budget. He alleged that the current government has kept the whole country in fear. So friends, listen how he starts his speech using a metaphor of the Chakravyuh. You must have known it, friends. Chakravyuh, I mean Chakravyuh. Chakravyuh means unbreakable circle. Unbreakable circle from the Mahabharata. You must have known about Chakravyuh by the Kauravas. हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्णा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। जो पद्मव्यूह वाले हैं
उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है, ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। He explained that the budget how primarily aims to bolster the monopoly of major corporations. He named Adani and Ambani, but upon being interrupted by Lok Sabha Speaker Om Birla, he referred to them as A1 and A2. A1 Adani, A2 Ambani. And he said, India is trapped in a Chakravyuh represented by the lotus symbol that PM Modi wears on his chest. So from Chakravyuh to Padmavyuh. Listening what he is saying during the discussion. The Chakravyuh entrapping India is driven by three forces. The concept of monopoly capital, where two individuals control the vast wealth. The nation's institutions and agencies like the CBI, ED and IT and the political executive. These are the three forces together. These are the three forces together. They have devastated the country. The ED, CBI and those political executives. They have devastated the country. They have destroyed the country. And drawing parallels to the Mahabharata, Rahul Gandhi ji mentioned that just as the warriors, the 6 warriors created the Chakravyuh in the ancient Indian epic, a similar few within the BJP and the government are constructing barriers for the poor and the marginalized people. Showing a photo of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman distributing the traditional Indian halwa. Gandhi said the halwa of the budget is being distributed, but he does not see a single OBC officer, a single tribal officer, or a single Dalit officer in the picture during the distribution of halwa. There is a deeper meaning. There is a deeper meaning of the distribution of halwa. The halwa of the country is being divided, but 73% of the population is not represented. बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने। कोई नहीं आ सकता। You are all enjoying the halwa while the rest of the country is left without any. He emphasized the need for a caste census. That is why he is emphasizing a caste census. He criticized Prime Minister Narendra Modi for favoring big businesses like A1, A2, while creating obstacles for small enterprises. This was the meaning. Friends, the budget fails to address the problems faced by the youth, the farmers, and the middle class. The Congress leader feared that this budget will weaken the farmers of this country,
will not help the youth of this country, will not help the laborers of this country. On the issue of minimum support price, Rahul Gandhi said, farmers are demanding the government to implement MSP. But this BJP government did not listen. He said in his speech that India Alliance will fulfill this demand of the farmers. When the India Alliance will form the government, they will fulfill these dreams of the farmers. The Congress MP said, in last 20 years, the lowest budget has been allocated for education. On small business sector, the leader of the opposition said the central government ended small businesses during the time of COVID. This is the reason why unemployment has increased. And now the finance minister is sitting. In such a situation, his question was that, what you have done for the youth? What you have done for the youth of this country? You talked about the internship program, but that is a joke. That is a joke. You said that it is in 500 companies of India. First you broke the legs and now you are trying to put a bandage. And listen, on Agnipath, what Rahul Gandhi is saying. Rahul Gandhi on Agnipath scheme is saying, in the name of Agnipath scheme, the government has trapped the youth in a Chakravyuh also. Rahul Gandhi also cornered the central government over the Agnipath scheme. He said in the name of Agnipath scheme, the government has trapped the youth in a Chakravyuh also. Gandhiji also criticized the budget for neglecting the issue of tax terrorism and failing to address the concerns of the middle class. He remarked that the middle class, who had once shown support by begging thalis, Bajao Thali, during the COVID pandemic, responding to the Prime Minister's appeal, it has now shifted towards the India bloc. That means when India bloc will come to power, the demands of the farmers will be fulfilled. This was the statement of Rahul Gandhiji. He said in Lok Sabha. With this, myself, Jagdanand Pradhan, namaskar.